Hello students, good morning all. This is me Dr. Koles. Welcome you all to this session. In this session, we will discuss some of the important questions on Indian economics that have been asked previously in the preliminary segment of the Odisha Civil Services examination. So, if we analyze the numbers of questions being asked in the past years, we will find 10 to 15 numbers of questions being asked in each year. So, understanding the huge importance of this segment, we will discuss the questions that have been asked in past years. So before starting the lecture, let me introduce first who am I actually. I am Dr. Kailash Chandra Devri. I am a veterinary surgeon currently working under the government of the Odisha in the Fisheries and Animal Resources Development Department. So let's get started. If we see the numbers of questions in the asked in the year 2015, we will find the first question is the who has been appointed as the first vice chairman of the NITI Aayog. The obvious answer is the Arvind Panagri. If we see, the NITI Aayog concept was introduced in the Indian economic system after abolishing the old aged planning commissions. So here the NITI Aayog, if we see the organogram of the NITI Aayog, then we have a chairperson who is always Mr. Prime Minister. Then under his there is a vice chairman who is Arvind Panagri during the inception of the NITI Aayog, but the current positions has been occupied by Mr. Dr. Rajiv Kumar, and there is a post for Chief Executive Officers which has been occupied by Mr. Amitabh Kant. So dear students, please don't forget this name because these are very much important. If you see the other names, then we will find Dr. V.K. Saraswat, who was the Director General of the DRDO, the Defense Research and Development Organization, DRDO. Then Kaushik Basu, he was an eminent economist and working in the World Bank Group in the year 2012 to 2016. And then Mr. K.V. Kamath, who is an economist, who is heading a committee known as K.V. Kamath Committee, who has been in news regarding the reconstruction of loan during COVID-19 pandemic. Right? So all these names you must be aware of. Next, coming to the next question, Startup and Stand Up India campaign is associated with very important, that is entrepreneurship skills of the rural India. It was brought under the ambitious program of the Make in India program, and in this program we want to make skill, or we have to make entrepreneurship skills of the rural India. Coming to the third number question, who among the following describes the Indian economy as the bullock capitalism? The option, the answer is the Lloyd and the Susan Roloff. आमे जानते after India got independence in the year 1947, आम पाखे दुईटा सेक्शंस पीपुल थे, गोटे थिला रिच ऑफ बेटर देयर सेल्फ जमींदार्स एंड अदर थे पुअर मास. रिच जमींदार मान संख्या बहुत अल्प थिला नंबर, पुअर मास को संख्या बहुत अधिक थिला. कंपेयर द लैंड होल्डिंग अरेंजमेंट्स, द रिच मान पाखे गोटे बिग अमाउंट ऑफ लैंड होल्डिंग्स थिला कंपेयर टू पुअर लार्ज पुअर मास छोट लैंड होल्डिंग थिला. एमती कहला कि जो मैंने दोज आर रिच जमींदार्स से माने यूटिलाइजिंग ए पेयर ऑफ बुलक दे आर एबल टू कल्टिवेट देयर लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड होल्डिंग्स. सो तो बुलक कैपिटलिज्म कहते यह कौन कला द देन कांग्रेस गवर्नमेंट had taken some of the important steps regarding the asymmetric patterns of the land holdings. That's why the land ceiling act pass करथिला, nationalization of the more assets करथिले. Right, up to 1975 गरीबी हटाओ प्रोग्राम जो चलता से टाइम रे भी लैंड को लेकिन बहुत सारा रिफॉर्म मेजर्स बनाइला. अप टू 1975 जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट से इमरजेंसी डिक्लेयर कले, राइट, से या पर रोक लगी था. देयर वाज एन रेस्ट्रेंट मेजर ओवर दिस लैंड होल्डिंग रिफॉर्म मेजर्स. तो 1977 रे जो अगेन इलेक्शंस है से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हारी जाइए, एंड से जनता दल गवर्नमेंट अंडर द मोरारजी देसाई केम इनटू द पावर. से पुणी एगेन देखाई से जनता दल गवर्नमेंट से पुणी एगेन ये बुलक कैपिटालिज्म को से एक्सप्लॉइट करते से फेवर देते. एगेन जो 1980 रे एगेन पुणी जो इलेक्शंस है जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पुणी एगेन पावर को आसला, पुणी एगेन से रिफॉर्म मेजर्स आनी थे. सो ये स्टडी करते
rule of in the Indian context. So this all phenomena are known as Bullock capitalism. Next, coming to the questions, per capita consumption expenditure as a measure of poverty was used for the first time was V.K. Dandekar and the N. Ratha. So poverty, so per capita consumption expenditure, which has been used for many decades as a measure of poverty, first time by V.K. Dandekar and the N. Ratha. Nothing to remember, nothing to research, more research about this question. Next question is, name the economist who related poverty with the concept of enlightenment. Poverty with the concept of enlightenment. So the obvious answer is Amartya Sen. So ଆମେ ଏଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପଭର୍ଟି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ପଭର୍ଟି ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ରିମେମ୍ବର ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋ ଥୋରୋ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ପଭର୍ଟି ଚାପ୍ଟର୍ସ ହୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ସ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ପଭର୍ଟି ପଭର୍ଟିର ଡେଫିନେସନ୍ସ କ'ଣ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ପଭର୍ଟି କ'ଣ ରିଲେଟିଭ୍ ପଭର୍ଟି କ'ଣ ପଭର୍ଟି ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ସ କେମିତି କରାଯାଏ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୟାଲୋରି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ରିପୋର୍ଟସ୍ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଭର୍ଟି ସେଗମେଣ୍ଟସରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଭର୍ଟି राइट पॉवर्टी एलिविएशंस प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ द कौन गरीबी हटाओ प्रोग्राम कौन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कौन राइट यही सब जिन आप देखिए पड़ो व्हाट इज एमजी नरेगा स्कीम्स व्हाट इज आपंकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट स्कीम राइट यही सब जिन आपको देखिए पड़ो बहुत इंपोर्टेंट पॉवर्टी सेगमेंट नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन द फास्ट एंड करेंट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर ऑफ द शंघाई चाइना and funded by countries of the BRICS bloc is nominated by India. Who among the following is the current incumbent? The obvious answer is the KV Kamath. आम पास्ट देखी पूर्व क्वेश्चन देखी KV Kamath committee is also associated with the reconstruction of the loans in the COVID pandemic. Right? Coming to the next question, the MRTP Act of 1969 has been replaced by the question is direct. The Competition Act of 2002. So what is the full form of the MRTP? So MRTP full form is Monopolies and Restrictive Trade Practice Act 1969. So Monopoly and Restrictive Trade Practice Act. So A Act को आमर गोटे थिला दत्ता कमिटी डियर स्टूडेंट्स प्लीज रिमेम्बर दत्ता कमिटी एमआरटीपी एक्ट से सुपारिश करते रेकमेंडेड करते अगेन ए एक्ट जो कंपिटिशन्स एक्ट 2002 तो रिप्लेस कला दैट कमिटी रिकमेंडेशन वाज राघवन कमिटी सो राघवन कमिटी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपिटिशन्स एक्ट ऑफ 2002 राइट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इंटरेस्ट पेमेंट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट सो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो इंटरेस्ट काटिदेवा जब माइनस करदे देन द रिमाइंडर विल बी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट सो एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट्स कौन रोज फिस्कल डेफिसिट है आम गोटे कंट्री रोचे आम कंट्री केते आम बोरोइंग करुँचे लैंडिंग करुँचे आम देखा बोरोइंग सब आम पाखे अधिक रोचे लैंडिंग सब आम पाखे कम रोचे सो देयर वी आर ऑलवेज द नेगेटिव साइड ऑफ द fiscal or we are on the fiscal deficit side. So the answer will be the gross primary deficit. Next question, coming to the question, the act of simultaneously buying in one market and selling in other market is known as arbitrage. The question is direct. गोटे मार्केट शेयर आप डायरेक्ट साइमल्टेनियसली किणुछन्ते और साइमल्टेनियसली बिक्री करुछन्ते गोटे मार्केट किणिक आउ गोटे मार्केट तक बिक्री करुछन्ते साइमल्टेनियस प्रोसेस इज नोन एज आर्बिट्रेज सो द क्वेश्चन इज डायरेक्ट प्लीज स्टूडेंट्स डू इट रिमेंबर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू बी इंक्लूसिव राइट अगेन आई एम रिपीटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इज सेड टू बी इंक्लूसिव व्हेन इट जनरेट्स मोर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आंसर इज ऑब्वियसली नो आम इंटरनल इकोनॉमिक ग्रोथ केते हम it creates economic opportunity along with the ensuring equal access to it. The answer is it is correct. It causes a largest segment of the population to remain outside the mainstream of the economy. No, we have to see all prospects. It earns the highest share of the gross domestic product. No, this is not. Our economic growth, the 5 pillars of the economic growth रोची आमको self reliant होगा पड़िबो
आमको तार जो आम इकोनॉमिक ग्रोथ रो जो आउटकम्स समस्त भीतर इक्वाली शेयरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ दरकार राइट ये सब जिनस ही आम इकोनॉमिक ग्रोथ को सी इंडिकेट करे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलला फाइनेंस आम लार्जर मिनियर मास को आम बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करिया फाइनेंशियल एक्टिविटीज आम तंको दबा राइट से आम कौन करते बैंकिंग फैसिलिटीज दबा से गोटे न्यू कॉन्सेप्ट आसला फाइनेंशियल इंक्लूजन रे बैंक्ड बैंकिंग दी अनबैंक्ड ए टाइम अनबैंक्ड ए कॉन्सेप्ट आम फाइनेंशियल इंक्लूजन को आम करते सो तर आंसर देखिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ द ऑल नेशनलाइज्ड बैंक ना दिस इज नॉट ए प्राइवेटाइजेशन करी हेनी नेशनलाइज्ड बैंक को ओपनिंग ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक इन मेगा सिटीज नो नो आम लार्जर मास को देखिए रूरल एरिया को पेनिट्रेट करा पड़ो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द ओपनिंग अकाउंट्स बाय कमर्शियल बैंक्स विथ जीरो बैलेंस नो 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 दिस वी कैन नॉट डिसकंटिन्यू इट बट बेटर टू से adoption of villages by bank branches so we have to open more numbers of branches bank branches in the village area right गोटे important questions पड़े गोटे वर्ल्ड बैंक always releases a document regarding global financial inclusion survey global financial inclusion survey GFIS report has been released every year by the world bank सो आम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन रूरल इंडिया रे करथिले आम फास्ट कौन करथिले आम से नुआ कॉन्सेप्ट सब आनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग माने गोटे बैंक जतकी भी लैंडिंग करिवो 40% मस्ट बी गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स गुड़ाक आप एग्रीकल्चर एजुकेशन राइट आप एमएसएमई सेक्टर्स ये सब सेक्टर को आपंकर एग्रीकल्चर मस्ट प्रोवाइड कर बैंक आउट ऑफ जब 100 टंका लोन दौर 40% 40 टंका मस्ट भी एठिक दब सेकेंड आम देखी अल्ट्रा स्मॉल ब्रांचेस एस्टाब्लिश करते अंडर द फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टेटस थर्ड आम KYC नो योर कस्टमर स्टेटस जाना जाइए जीरो अकाउंट ओपनिंग करते और नो फ्रिल अकाउंट को करते बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस गोटे गाँव में बैंक मित्र बैंक साथी जमी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंस को आम करते राइट अगेन इन द ईयर 2005 गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया से बहुत स्ट्रेस था रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन से आम गोटे BSBD अकाउंट खोला होता बेसिक सेविंग्स एंड बैंक बेसिक डिपोजिट अकाउंट बेसिक सेविंग्स एंड बेसिक डिपोजिट अकाउंट्स खोला होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कैप्टेनशिप ऑफ द प्रधानमंत्री मोदी आसिले सी मुद्रा योजना खोजले स्टूडेंट्स डू इट रिमेंबर ऑलवेज मुद्रार फुल फॉर्म जानवे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी अगेन आई एम रिपीटिंग मुद्रा MUDRA माइक्रो यूनिट development and refinance agency this mudra has been regulated by bank SEBI so always all these things we have to know coming to the questions after the year 2016 then here the first question is the which of the following institution estimate the national income of the India very important कि आम देश नेशनल इनकम को एस्टिमेट करे the obvious answer the central statistical office ए क्वेश्चन टा 3 times एग्जाम रे पड़ी so a question बहुत important please students do not forget right coming to the next question in the year 2015 the United Nations General Assembly announced a set of 17 sustainable development goals एटा ही गोटे ऑब्जेक्टिव हो गला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैज बीन अनाउंस्ड इन द ईयर 2015 राइट कहा द्वारा करागला यूनाइटेड स्टेट्स UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को डिक्लेयर करथिला राइट दुटा ऑब्जेक्टिव पाई गेले live one goal is content in the following choose it so strengthening the bureaucracy it is not introducing the free market economy it is not reduce the inequality within and among countries it is correct and restrain the inflammatory price it is not आपन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो 17टा गोल मन के पड़ो जेमति कि फर्स्ट गोल आपनकर जीरो पॉवर्टी राइट सेकंड नो हंगर ये सब जिन थर्ड रोज ये सब जिन आप वेलबिंग प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट 3 4 5 अप टू 17 यू हैव टू रिमेंबर सो 17 मन रखिए देन आपको एसए पेपर में कोट कला आप बहुत सारा एतर आप फर्दर मटेरियल पाइजिबे
Coming to the next question, who told we are trying to construct a more inclusive society? Inclusive society definition है गोटे सोसाइटी जो सबू मेंबर माने जो इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक आउटपुट ग्रोथ आउटपुट रिजल्ट समस्त इक्वली शेयर और समस्ते पाई परिबे. That is a concept of the inclusive society. We are going to make a country in which no one is left out, right? So it a quite difficult question thila. Most of the students of 99.9% student are difficult. The correct answer is the Franklin D Roosevelt जे को propound करथिले, right? The next question is it is human geography. Still I am discussing which period is referred to as the period of the population explosion in India. Population explosion को period को generally just please remember 1951 population geography would a very important segment of population dynamics. Please students go very briefly. What is population dynamics? What is maternal mortality rate? What is infant mortality rate? What is incidence rate? What is population explosion? Hindu growth rate? All this. What is popular? What is demographic dividend? What is demographic transitions? Everything you have to know, right? Coming to the next questions. In which of the following major state of the India the gross enrollment ratio of the class 1 to 8 during 2014-15 is the least? The correct answer is Telangana. आपण नोट करिए GER gross enrollment ratio जोटा कि अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रे 100% टारगेट रखा है बाय 2030. एटा मु एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपन को दउची. Coming to the next question, from the following identify the most appropriate strategy of the national health missions 2030. एटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसी गला. नेशनल हेल्थ मिशंस केबेति एस्टैब्लिश कराइतला नेशनल 2013. ए नेशनल हेल्थ मिशन अंडर दुईटा इंपोर्टेंट सेगमेंट काम करछि. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एटा रूरल एरिया रे, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एटा अर्बन सिटी जुडे काम करछि. So NHM the prime importance the prime objective of the so here the universal access to the equitable affordable and quality health services. The correct option is C, right? Next, coming to the questions, the first ever national health policy of the government was first designed by the 1983. The answer will be the B. Next, coming to the question, all are I am not going in detail. The important question here is the book 20 Years Crisis is written by the E.H. Carr. Option number is B. Coming to the 56, which of the following is the correct definition of the economic growth? Increase in the productivity of the labor over time. It is not only the labor. Increase in the productivity of the manufacturing sector over the good, not exactly manufacturing sector. Increase the per capita real GDP over the time. So we have to ensure the GDP. There आम देश आज 10 टंका इनकम कर टोटल. So आम जति नेक्स्ट ईयर जति आम 20 रुपीज इनकम कल टोटल, that is a 10%, that is a increase in the economy or increase in the per capita or increase in the output over the first year. So this is the economic growth, right? Gross domestic product हमको देखिए पड़ेगा. We have in the GDP we have different sectors रहुची, agriculture sectors, आपनकर manufacturing sectors or industrial sector. Third is the service sectors, right? So all the three sectors must contribute a larger proportional amount to the national GDP. Then coming to the numbers of questions being asked in the year 2017, right? In the year 2017, the first question was the first question. Okay. Which state became the first state to ratify the GST bill? The correct answer is the Assam. The question was direct. GST was introduced. Very important. GST was introduced in the Amendment Act of 101. Right? 2001 से आमर कराइथिला. हम 100 नंबर जोड़ा इकनी दे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विथ बांग्लादेश. 102 कोन इतला मन रखे, 103 कोन इतला मन रखे. 103 टा वर्तमान करेंटली इन न्यूज अछि जोड़ा कि हमर EWS सेक्शंस जो हमर एजुकेशन और 10% मोर सीट्स देबे कराइथिला. राइट? Then coming to the next questions, which of the following denomination was introduced immediately after the announcing the demonetization? The correct answer is the 2000 rupees currency note, right? Next, questions is another question. For information, Indica was written by
मेगास्थेनिस जे कि आम चंद्रगुप्त मौर्य टाइम रे जे आसते इंडिया को ग्रीक philosophers. Coming to the next question, which of the following is not an objective of the NITI AYOG? Already I am discussed what is NITI AYOG concept. NITI AYOG कहीं आसला तो all planning commission से replace करथिला. So here the NITI AYOG जो हम तैयारी कराइथिला NITI AYOG मूल concept है. हम गोटे country एमती रहउची ए country हम center रहउची state रहउची. Actually जो पूर्व रे planning commission थिला ए planning commissions grassroots रे कोन हबो से सेठो डिसाइड करूथिला. एससी रूम में बसिक से गोटे कोर कमिटी से डिसाइड करते एक्चुअली ग्रासरूट रूम में कौन कौन होता दे आर नॉट बदर्ड अबाउट द सिचुएशन ऑफ द ग्रासरूट क्योंकि नीति आयोग कॉन्सेप्ट आइला हाँ प्लानिंग कमिशन जो था बॉटम टॉप टू बॉटम अप्रोच था नीति आयोग कॉन्सेप्ट नीति आयोग ना ना फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विथ ग्रासरूट एंड वी हैव टू मेक सच पॉलिसीज दैट इज अप्रोप्रिएट टू मिटिगेट दैट प्रॉब्लम इन दैट एरिया सो इट इज एरिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम को से आपंकर सॉर्ट आउट करने चेष्टा करते दैट्स नीति आयोग कॉन्सेप्ट कहते बॉटम टू टॉप अप्रोच राइट एथपाई हम नीति आयोग कॉन्सेप्ट आसाला सो द क्वेश्चन यहाँ कहूँ व्हिच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव नीति आयोग सो नीति आयोग कोटा गोटे ऑब्जेक्टिव नुह नॉट कही allocating the financial resources to the state ना ना financial resources हम financial resources देवाई we have a finance commissions चीफ सेंट्रल रे गोटे फाइनेंस कमिशन और स्टेट रे गोटे मतलब स्टेट फाइनेंस कमिशन अच्छे सो नीति आयोग केवे कहबनी केवे रिसोर्सेस देवाई क्या से खाली ओनली पॉलिसी डिवाइज कर टू फॉस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यस न्यू कॉन्सेप्ट आउस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आ गोटे कॉन्सेप्ट आउस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये दुटा कॉन्सेप्ट को हम नीति आयोग प्रमोट कर क्वेश्चन इज यस to develop mechanisms to formulate credible plans to the village level and aggregate these progressively at higher levels of the government. Okay, गाँव सब गोटे प्रोग्रेसिव प्लानिंग सब तैयारी करा सेटा को हम हायर क्वार्टर को समय ताको हमें परकोलेट करिया दरकार से कोथ जरा बॉटम टू टॉप अप्रोच रहबा दरकार सो इट इज ए फंक्शन ऑफ द नीति आयोग to pay attention to the weaker section of the society that may not have been benefited from the economic growth. Yes, we have to listen the problems of the grassroots, the problems of the weaker section of the society. So this is the main thing that is addressed by the NITI AYOG. So the option, so the answer is the allocating the financial resources of the state. Question number 8. Coming to the next question, which statement depicts the best definition of the sustainable development? Right, sustainable development कोटा करूचे. So it means optimal utilization of the natural resources. No, sustainable development means आमर तो गोटे suppose natural resources रोचे तो X amount रोचे. आमर जो X amount दे गोटे generation उसको साइड दबा. If we complete or we will finish all these natural resources within one generation, then our next generation might not get the opportunity to utilize it. That's why आमे एटा एमिति उपाय रे ताकू आमे ताकू करबा जेमति कि तारो हमर ताको नेक्स्ट जनरेशंस अप टू फ्यू जनरेशंस और मेनी मोर जनरेशंस ताको हमें एंजॉय करि पारे विदाउट मच फॉर एक्सप्लॉइटिंग इट सो सस्टेनेबल यूज एंड नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसीडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन नो वी हैव टू कंसीडर द फ्यूचर जनरेशन आल्सो देन प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड्स व्हाइल कंसीडर्स द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल ओके हमको आम नेचुरल रिसोर्सेज को आम एमती यूटिलाइज करा दरकार आम यूटिलाइज कर और आम नेक्स्ट जनरेशन भी ताको भी से यूटिलाइज करने चांस दवा सो दिस इज द मेन थिंग और मेन एजेंडा बिहाइंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम राइट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ ग्रोइंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट इन द इंडिया सो कंज्यूमर गुड्स आंसर इज डी ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन इंडिया it is not a cause of growing consumer goods market in India. Next coming to the question, NAFED is a cooperative organization. NAFED, it is a national level organization. And what is the full form of the NAFED? NAFED is the National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited. Again, I am repeating the full form of the NAFED, National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India. It was established in the year 1958 under the Cooperative Act. Next coming the question, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is run by, very important, never confuse it with any scheduled commercial bank. It is always run by the Department of the Financial Services, Ministry of the Finance. Right? So Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana or PMJD Jan Dhan Yojana
एथिरे आमे जीरो अकाउंट खोलुछंदी नो फ्रिल अकाउंट सब खोलुछंदी राइट आमे एथिरे जनधन कार्ड मध्ये डेबिट कार्ड दोछंदी जो थरे कि आपन 10,000 रुपीज रो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रोज एक्सीडेंटल कवरेज रोची जीरो अकाउंट आप खोली पारे खाता सो ऑल दिस फैसिलिटीज हैव बीन गिवन इन द प्रधानमंत्री जनधन सो इट्स ए प्रधानमंत्री जनधन योजना रो बेसिक ऑब्जेक्टिव वाला फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आमे डिस्कशन करथिले देन कमिंग टू द क्वेश्चंस what does it mean by the human capital formations human capital formations कहले हम कोन डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी नो 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 इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ ह्यूमन हम ह्यूमन गोटे देश को हम केमिति गोटे ह्यूमन कैपिटल माने हम गोटे पॉपुलेशन को केमिति हम स्किलिंग दबा केमिति एजुकेशन दबा केमिति बेसिक हेल्थ सर्विसेज दबा केमिति मिनिमम बेसिक एमिनिटी दबा सो दैट द ह्यूमन कैपिटल द ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल द ह्यूमन स्किल लेवल go up to a remarkable height or markable height so the option will be the B. So development of the abilities and skills of the people, right? So this is the chief objective of the human capital formation. Coming to the next question, the main argument to establish special economic zone in India. आम इकोनॉमिक जोन कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहीं आम एस्टाब्लिश करुचे से स्पेशल इकोनॉमिक जोन रे आम किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा से मैन्युफैक्चर को आम एक्सपोर्ट करिया मेनली तार चीफ एग्जेक्टिव मोर मैन्युफैक्चरिंग एंड मोर एक्सपोर्ट नथिंग एल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी सो द ऑप्शन विल बी द ऑप्शन ए टू गिव ए बूस्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इट इज नॉट एक्चुअली एग्रीकल्चरल गुड it is export manufacture goods that आपनकर MSME sector हो mostly right coming to the next question जननी सुरक्षा योजना it is under the ministry of the health ministry then the correct answer is the जननी सुरक्षा योजना is 100% central sponsored scheme very important right the whole money or the whole amount of financial the total financial allocation is being borne by the central government. Coming to the next question, inclusive growth in India आम जानते inclusive growth आम डिस्कस करते concept through a progressive tax तरह ही आम ताको आम अचीव कर परिया. The option will be the A. Payment banks are different from the other commercial banks in the following types. We have two different types of bank. Please students to remember. Scheduled commercial bank, another is the payment bank. ये जो टाइप डिस्कशन करें both the banks are being regulated under the banking regulatory act of 1949 right scheduled commercial bank टा हमर जे कोनसी कस्टमर जे कोनसी लोक पकर एनी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट से आसिट करि परियो एनी अमाउंट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट आसिट करि परियो किंतु इन केस ऑफ पेमेंट बैंक कांसेप्ट एथिरे गुटे कस्टमर टू मैक्सिमम 1 लाख पर कस्टमर से एक्सेप्ट करि परियो फर्स्ट डिफरेंस सेकंड गोटे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक आम एस्टाब्लीश करें मिनिमम इनिशियल केते पैसा थवा दरकार आम 500 crore रहा दरकार बट इन केस ऑफ पेमेंट बैंक इट मस्ट बी 100 crore राइट द इम्पोर्टेंट थिंग स्केड्यूल कमर्शियल बैंक जो नेशनलाइजेशन बैंक प्राइवेट बैंक ये सब जिन करे आम लेंडिंग कर ऋण दे पार क्रेडिट कार्ड दे पार आम ए नॉन रेसिडेंट इंडियंस को मध्य पैसा दे पार बट इन केस ऑफ पेमेंट बैंक ऑल दिस थिंग्स आर नॉट हियर आम लेंडिंग कर क्रेडिट कार्ड इश्यू कर एनआरआई मान को लोन दे पार और डिपोजिट भी आनी पार so these are the some of the limitations incorporated in the payment banking system. So coming to the question, payment banks are different from the other commercial bank in the following way. These banks only accept the deposits. Yes, it is also correct. Only provide payment banks are different from the in the following ways. These banks okay only provide payments and the remittance services. Okay. Only distribute third-party financial products. Okay. Accept deposits, provide payments and remittances services. Distribute third-party financial products are not allowed to lend or issue cards. So this is the correct option. So payment banks, this is the main demarcating point where the payment banks cannot do this services. Right. Come to the next question. Usual principal status employment. Principal status employment is measured in. The option will be the B.
Number of persons who remain unemployed for a major part of the period. Number of the persons who remain unemployed major part of the year जमक नहले ताकू आमे यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस इंक्रीमेंट रे मेजर करथांती. Coming to the next question, Tendulkar committee always it is associated with poverty estimations. Please students do remember. Coming to the questions asked in 2018, the first question is what is the headquarters of the UNESCO? Please students do remember the Paris. So this UNESCO or the Paris has been the main bond of contention between the US and the France. So headquarters of the UNESCO we have followed. Then coming to the next question, World Economic Outlook report is published by important World Economic the IMF, International Monetary Fund. Please students, some of the reports released by the World Bank, IMF. Please students do it remember. Along with the World Economic Outlook report, the International Monetary Fund also releases some another document, that is Global Financial Stability Report. Right. Coming to the World Bank, it releases the Ease of Doing Business. Then UNCTAD and OECD also there. So UNCTAD, full form United Nations Conference on Trade and Development. United Nations Conference on Trade and Development. Then coming to the OECD, the full form is the World Economic Corporation Development Corporations. So here, so you have to remember all this name. Then OTCI, the full form first mone rakhitandu. OTCI full form over the loan for exchange of India. About the loan for exchange of India. So here the answer will be, so OTCI is an Indian share market. Right? Please students, take a career cost, but you have to know. Which of the following sectors now contributes the largest percentage towards the gross national product? So the obvious answer is the service sector. So we have three different sectors. So the agriculture sector, the manufacturing, and the better to say industrial. So not manufacturing, the industrial sector, and the service sector. Right. So agriculture sector is producing around 14 to 15% of the GDP. The industry sector producing around 30%, and the rest 40 to 42% is being provided by the services. So service sector dominates over all the subsectors or sectors. So again the question has been asked, the national income is estimated by the Central Statistical Organization. This question has been asked in the previous year also. Then coming to the next question, to lower the interest rate, the RBI should buy securities. The only option of the left with the RBI. Right? The question is direct. So mixed economy means an economy. Mixed economy manela आमर जो कैपिटालिस्ट भी रहिबे आ स्टेट रो इंटरवेंस भी रहिबो, प्राइवेट प्लेयर्स भी रहिबे, गवर्नमेंट भी रहिबो. राइट. प्राइवेट प्लेयर्स माने मोनोपोली करि परन, दे आर अंडर द सर्टेन लॉज रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न. Both agriculture and the industry are equally by the state, not. There is coexistence of the public sector along with the private sector. The answer is yes. Importance of small scale industry, no. Economy is controlled by the military, no, this is not military. So the option will be second. So absolute poverty means garibi, absolute poverty because there are basic requirement for life नथिबो. बेसिक खाद्य वस्त्र पानी बासगृह यू जिन नथिबो. सो दिस इज कैन बी कनसिडर्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जनरली आम कला बेले आम केते आम खाऊे जो केते तार फीडिंग हैबिटेट को आम देखी, फीडिंग नेचर देखते. फीडिंग नेचर को आम केमी एस्टिमेट करते तार बेसिक कैलोरी इनटेक, मिनिमम बेसिक कैलोरी इनटेक को आम एस्टिमेट करते. सो द ऑप्शन गुड़ा देखिए कौन कौन रोचे. Poverty in terms of absolute number of people, not absolute number of people, no, the answer is wrong. Poverty in terms of basic minimum calorie requirement, option is yes. Poverty in terms of prevailing the price level, no, this is not. Poverty in terms of the absolute level of the unemployment, no. So option will be the second.
Third, who wrote the book on planned economy for the India? So the M. Viswesvaraya, very important. Another questions for a drain theory was propounded by, you have to remember the name. Con. You give me in the comment box. I am telling the Dada Bhai Naroji. Drain theory. Right? Coming to the next question, Graham's law, Gresham's law outcomes is incorporated when? It is important जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स थी से माने एटा बेटर आंसर दे करिया देखो ग्रिशम्स लॉ गोटे होची ग्रिशम जने क्वीन एलिजाबेथ को इकोनॉमिक एडवाइजर थिले तांको अनुसार मनी टू टाइप्स रो गोटेला गुड मनी आ गोटेला बैड मनी ग्रिशम्स लॉ रो गोटे केमती कहूची सपोज दीटा करेन्सी अछि गोटे एक्स गोटे वाई सपोज एक्स टा हला डोमेस्टिक करेन्सी एटा हला फॉरेन करेन्सी तो किसी इकोनॉमिस्ट किसी फाइनेंशियल पीपल जो मैंने धर किसी एस्टिमेट करें कौन कहे डोमेस्टिक मनीटा को धर एक्स मनीटा को अंडर भैल्युएसन करदे आउ कंपेयर टू दिस से मैंने फॉरेन करेन्सी को ओवर भैल्युएसन करदे सपोज इंडियन रुपीज रोची अमेरिकन डॉलर रोची सर इंडियन रुपीज भैल्यूटा कम करदे डॉलर टू बढ़े से टाइम कौन करे इंडियन रुपीर भैल्यू कमी जाए सप्लाई तार कमी जाए तार प्रोडक्शन इंडियन रुपीर कमी जाए से यार कौन करे जो यार एंट्री और एंट्री टू मार्केट इंक्रीजेस बाहर मनी मार्केट इंक्रीजेस से कहुए मार्केट रे आउटसाइडर मनी बहुत सारा रही जाए सो आउटसाइडर मनी कह बैड मनी इनसाइड जो मनी जो जो किसी मिस इनफर्मेशन बेले किसी अंडर एस्टिमेट करदे तार वैल्यू कमी जाए गुड मनी सो एटा कहते बैड मनी इज कमिंग आउट ऑफ गुड मनी राइट और बैड मनी गिव्स आउट गुड मनी सो यही कॉन्सेप्ट हम कहते सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रेशम्स लॉ सो ग्रेशम्स लॉ इज गुड मनी इज होर्डेड नॉट गुड मनी इज मेल्टेड नॉट गुड मनी इज एक्सपोर्टेड नॉट गुड मनी इज होर्डेड ओके एटा कमी जीवो तार प्रोडक्शन तार बढ़ी जो मेल्टेड एंड एक्सपोर्टेड द ऑप्शन इज C. All the things are there. Then coming to the another important segment, nationalization of the bank was done for the purpose of. बर्तमान आम देखुं नेशनलाइजेशन बैंक कराइला इन द ईयर 1969 रे बर्तमान कंटेक्स्ट आप देखते मोदी गवर्नमेंट सब डिस इन्वेस्टमेंट कर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट रन स्टेट जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंक आमर प्राइवेटाइजेशन कर सेन्स में देखुची व्हाट इज एक्चुअल कॉन्सेप्ट नेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट सो गोटे आसेट रोचे गोटे आसेट धर आम कंट्री भर आसेट रोचे किसी लोक द्वारा से परिचालित हो किसी लोक कंट्रोल कर प्राइवेट प्लेयर थे कि आज होल दिस इज आवर नेशनल्स प्रॉपर्टी नेशनल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कौन कर सी सब जिन निज पाक कि बट नाउ दैट asset is now known as public sector asset or public sector undertakings, right? So the transfer of the public assets to be operated or to be owned by the state government or the central government, that is known as nationalization of the products. जब 1969 रे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थे से नेशनलाइजेशन प्रोसेस करते फॉर 14 मेजर बैंक्स, राइट? इन द ईयर 1980 अगेन 6 मेजर बैंक्स से करते इन टोटल से 20 बैंक को से नेशनलाइजेशन करते द एग्जैक्ट डेट इज 19 जुलाई 1969. वेरी इंपोर्टेंट, प्लीज स्टूडेंट्स डू नॉट रिमेंबर, राइट? वेरी वेरी इंपोर्टेंट. सो या करने इंडियन बैंकिंग पॉलिसी 1969 पास करने पड़ता. यार मेन ऑब्जेक्टिव कौन था? मेन ऑब्जेक्टिव थी कहीं नेशनलाइजेशन कराला जो बड़ बड़ किसी बैंक था से माने कैपिटालिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मान सब लोन दौले. सो फॉर कौन था कैपिटालिस्ट मान पाखे गोटे ऑलवेज गोटे बिग चंक्स ऑफ प्रोडक्शन होता कंपेयर टू द लार्ज मास पाखे बहुत कम सारा प्रोडक्शन होता. दैट इज आसिमेट्री. से सी कहले जदि बैंक गुड़ा को आम जब नेशनलाइजेशन करदे से कौन सब लोक से क्रेडिट फैसिलिटी दे पार गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन दे पार सब बैंक को सब बैंक मान तुम प्लीज रूरल मास को तुम क्रेडिट फैसिलिटी दियो सो दैट रूरल मास क्रेडिट फैसिलिटी आम दे पार
सेठू भी मैन्युफैक्चरिंग हो पार आज ए होल आम देशर जीडीपी बढ़ी पार. सो द चीफ ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव द क्रेडिट फैसिलिटी एट द ग्रासरूट लेवल. राइट से नेशनलाइजेशन होगापर आम के नुआ कनसेप्ट सब इम्प्लीमेंट कराइला जमीक आप प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जमी कहते 40% ऑफ द टोटल लोन अमाउंट्स द प्रायोरिटी सेक्टर जो एग्रीकल्चर एजुकेशन आपंकर हाउसिंग सेक्टर्स वीकर सेक्शन ऑफ द पीपुल को सी देवाई पड़ो 40%. आउ नेशनलाइजेशन होगापर आम कौन सब सुविधा है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट डीआरआई लोन सब दिगला डिफरेंशियल रेट ऑफ बहुत कनसेसनल रेट दिगला लोन. थर्ड दिगला लीड बैंक सिस्टम कराइला गोटे पर्टिकुलर एरिया गोटे बैंक को असाइन कर तुम ये एरिया टोटल फाइनेंशियल डेवलपमेंट कर लीड बैंक कनसेप्ट कराइला 1969 तो इंट्रोड्यूस कराइला. राइट एनादर कथा रूरल रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी ग्राम्य बैंक फैंक सब आम या आरआरबी को रेगुलेट करने नाबार्ड तैयारी कराइला इन द 1982. राइट नेशनल बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड. राइट ये सब आम एस्टाब्लिश करते. सो ऑल दिस थिंग्स वाज ओनली happens to be possible due to the nationalization of the bank system. You may find a very important quote. It is the positive approach to problem with the growth with the stability and the social justice that we sought to give new emphasis and a new sense of urgency to the economic policy. In recent months, the nationalization of the banks, for which there is overwhelming support in this honorable house and the country at large, will, I am sure, be put out on a stable footing. So this is the famous saying called by the Madam Gandhi. Then next question is the headquarter of the World Trade Organization. World Trade Organization जो रेगुलेट कर सब trading activities को all over the world. It was established in the year 1995. Remember it. The headquarter is at the Geneva. Right. Next, coming to the questions, what is the gilt edged security? gilt edged security G SEC कुआ जाए कि मतलब गवर्नमेंट सिक्यूरीटी कुआ जाए. राइट तर गवर्नमेंट पाखे पैसा सरीगला. राइट गवर्नमेंट पाखे पैसा ना गवर्नमेंट तार कौन कर मार्केट रू पैसा नब मार्केट रू पैसा केमती नब. राइट से किसी इश्यू से किसी बॉन्ड इश्यू कर. राइट बॉन्ड इश्यू कर किसी ग्यारंटी सी टाइप ग्यारंटी इश्यू कर कि मतलब मार्केट ये पैसा दिए तार टोटाल जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रही. सफेस्ट सिक्यूरीटी सब कहती. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाखे तो पैसा सर से टू टाइप्स ऑफ सिक्यूरीटी से बॉन्ड से इश्यू करे. गोटे सर्ट टर्म पर इश्यू करे गोटे लंग टर्म पर इश्यू करे. सर्ट टर्म जनरली लेस देन 1 year लंग टर्म जो मोर देन 1 year. सर्ट टर्म जो इश्यू करे ट्रेजरी बिल कहती. लंग टर्म जो यूज करे जी सेक और बॉन्ड और डेप्ट सिक्यूरीटी कहती. राइट सो दिस gilt edged सिक्यूरीटी जो जी सिक्यूरीटी कहती that is being issued by the government. Right, answer is clear. Third, one criticism of the ROSTOW'S theory of the economic growth. Actually, I am not aware, dear students. Actually, I am not aware much of the ROSTOW'S theory of the economic growth. Please, students, go and search the appropriate answer in the Wikipedia. Next, coming to the question into the act in 2019, the headquarter of the Asian इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. सो मुझे देखुची 2-3 वर्ष गोटे क्वेश्चन पड़े हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक पड़ू. सो यार AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक हेडक्वार्टर है आपंकर बेजिंग. से देखिए तार मोर रिलेटेड आंसर क्वेश्चन देखा द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये गोटे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तार हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC. वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर भी सही है वाशिंगटन DC. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा. राइट देन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेडक्वार्टर एट जेनेवा. प्लीज स्टूडेंट्स राइट डाउन इट. न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर Shanghai which is present in China. Asian Development Bank headquarter is the Manila which is present in Philippines. So you have to remember of the all the headquarter of the international financial institutions. Coming to the next questions, when we argue that small industries generate large volume of the employment, what we essentially mean that. One second.
When we argue that small industries generate large volume of the employment, what we essentially imply that. So the correct answer will be the first option of the number of the worker in a small unit will be larger than that of big unit. Answer is obviously no. Small number of workers employed per unit capital is larger in small unit than a big unit. The answer is correct. The number of the workers employed to produce consumers good will be more. No. So the correct answer will be 2. The most popular definition of the sustainable development, right, is given. Already आम जो डिस्कसन करते कौटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम कौटा को यूज करते दि इम्पोर्टाट इज वाज गिवन बाय दि ब्रुनलैंड रिपोर्ट. ऑप्शन इज दि सी. आम जानते 1992 रे आर्थ समिट होता सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन आर्थ समिट एट रियो डे जेनेरियो जो थी कि आमर एजेंडा 21 डिसाइड कराई यही जगार आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मध्य आमर ताको फास्ट ताको कॉर्नरस्टोन ताको दिया जाइतला. राइट. बुलॉक रिपोर्ट वाज गिवन इन द ईयर 1987. देन इन द ईयर 2000 वी हैव अडॉप्टेड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्रोग्राम. देन इन द ईयर 2015 वी हैव अडॉप्टेड द स्पेशल डेवलपमेंट गोल जो 15 आम ताको पॉलिसी करथिले ताको इम्प्लीमेंट करते 2017 रे. स्पेशल डेवलपमेंट गोल रे आप मन रखते 17टा जो रोज गोल ताको प्लीज स्टूडेंट्स टू रिमेंबर. फास्ट रोज नो पॉवर्टी, सेकेंड नो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ. प्लीज स्टूडेंट्स मन रखिए कोविड पैंडेमिक चलती तेणु हेल्थ सस्टेनेबल गोल नंबर 3 रे आसुची. राइट. फोर्थ एजुकेशन आसुची. फिफ्थ आसुची जेंडर इनइक्वालिटी आसुची. सो एंड सो फोर्थ. प्लीज स्टूडेंट्स डू रिमेंबर. Coming to the next question, HDI is entrusted with reference to HDI full form वाला Human Development Index. Right, Human Development Index. Human Development Index is released, a index that is released by the United Nations Development UNDP program development project. So here 3 important parameters are there while calculating the index. So we have life expectancy at birth. What is the GDP or GNP of that nation? Third is your education. ये 3टा पैरामीटर ने कि हमर GDI करा जाए. So here the question is the life expectancy at birth. Yes, it is a parameter. Real GDP per capita. Yes, it is a parameter. Infant mortality, which is coming on the life expectancy at birth. Yes, mortality also includes here. So the answer will be all of the above. Coming to the next question, which 5-year plan has laid emphasis on the faster, sustainable and inclusive growth? So this option is the 12th 5-year plan. Right. 11th 5-year plan कौची rapid and more inclusive growth. Sustainable what use कराइतला मन रखिते only during the 12th 5-year plan. Right. 9th 5-year plan definition थला इटा गोटे important students मन रखिते growth with social justice and equality. So social justice and equality the word अपन जानिए तो immediately अपन 9th 5-year plan तक ऑप्शन चूज करिए. Coming to the next question, what is the animal on the insignia of the RBI? Right, the correct answer is the tiger. Third, the special economic zone created have been the special economic zone created have been created for the first time in the EXIM policy of the 2005. So this is an unexpected question, but the option is quite confusing. So स्पेशल इकोनॉमिक जोन आम कहीं तैयारी करते तार आम ओनली टू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आम जो प्रोडक्ट्स को आम एक्सपोर्ट करने. सो दिस इज द चीफ एम ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 इज एसोसिएटेड विथ, प्लीज स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, स्टोरेज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. सो दिस इज द हाइड्रोकार्बन पॉलिसी एग्जाम मध्ये पड़ता 2025. देन व्हाट इज द ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट? वी हैव इन्वेस्टमेंट, two types of investment. In the greenfield investment, in the brownfield investment. Greenfield investment हम कोटे फॉरेन कंट्री रे कोटे निज कंट्री भी हो जो हम इन्वेस्टमेंट करूछन से सपोज किछि गोटे एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होछि, एक्जिस्टिंग एनवायरनमेंट होछि, एक्जिस्टिंग किछि
थिंग्स रोचे जोटा कि एनवायरनमेंट सहित रिलेटेड आम ताको डिस्ट्रॉय न करिक ताको कनसीडर करिक ताको कनसीडर करिक ताहारी ऊपर आम किसी इन्वेस्टमेंट करबा विदाउट हाम्परिंग दैट एक्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, राइट, दैट इज नोन एज ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट. बट इन केस ऑफ ब्राउनफील्ड वी हैव टू कंप्लीटली न्यू थिंग्स ऊपर आम इन्वेस्टमेंट करिया. सो द ऑप्शन गुड़ा हम देखिए ए फॉर्म विद एफडीआई व्हेयर पेरेंट कंपनी स्टार्ट्स न्यू वेंचर इन फॉरेन कंट्री by constructing new operational facilities. No, it is not new. Brownfield not new. A form of FDI where a company purchase or lease existing production facility to launch a new product. Yes, this is the correct option. Option 2. Investment of the NR is no. Investment shares and debts no. So greenfield investment la existing production facility जोटे थिबो. So all the things we have discussed that has been asked in the different years of the OPSC preliminary examinations. If you have truly enjoyed this video, please subscribe the Dr. College Lectures channel, press the bell icon as well as like or circulate it among your friends. So until the next video, stay safe, stay indoor, have a good day. Thank you. God bless.